जी अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी से जहांज़ैब अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अपडेट्स थी थोड़ी सी, और छोटा सा एक तज़किया देना चाह रहा था क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तशरीफ़ ला रहे हैं कुछ दिनों में वाशिंगटन डीसी में, और वो अमरीकी कांग्रेस से भी खिताब करेंगे, अमरीकी कांग्रेस अरकान से। कांग्रेस की इमारत के अंदर बहुत बड़ा ऑनर है किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए, और ये ऑनर पाकिस्तानी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी हासिल रहा है। उन्होंने अमरीकी कांग्रेस से भी खिताब किया था। नरेंद्र मोदी सदर बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो इंडियन अमेरिकन कारोबारी अफराद हैं, अमरीकी सरमायाकार हैं, उनसे भी मुलाकातें करेंगे और उनको बताएंगे जो भारत में इस वक्त सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन इस खबर के पीछे भी एक खबर जो अहम है, जिसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ, वो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी बहुत ही मारूफ रहनुमा हैं, मारूफ अपोजिशन रहनुमा इस वक्त भारत के अंदर, कांग्रेस पार्टी के रहनुमा हैं, और अभी चंद दिन पहले वो वाशिंगटन डीसी में तशरीफ़ लाए थे। उन्हें हमने इनवाइट किया था अमेरिकन नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू के लिए, और उनसे जो गुफ्तगू हुई ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड, उससे ये महसूस हुआ कि वो भारत का रियल सॉफ्ट इमेज है। और उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में अंदर अपनी जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि कांग्रेस पार्टी का भारत मोदी के भारत से बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने ये कहा, बरमला इजहार किया इस बात का कि नरेंद्र मोदी भारत के अंदर नफ़रतों को फ़रोग़ दे रहा है, नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दे रहा है, लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि नफ़रतों के इस बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है। सो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलो। In a market of hatred, open a little shop of love and affection. उन्होंने कहा कि भारत का असल चेहरा कुछ और है, जहां पर हर कम्युनिटी को, हर शख्स को आज़ादी के साथ रहने का हक हासिल है, और ये हक भारत का आइन उसको फराहम करता है। मजहबी आज़ादी पर जब उनसे बात हुई, उन्होंने इस चीज़ को माना कि नफ़रतें फैल रही हैं और मजहबी आज़ादी के मामले को ठीक करने के लिए सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जो हैं वो जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, वो वहाँ पर भारत के अंदर लोगों को तकसीम कर रही है, जिसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। It's not just religious minorities, it's everybody, because we give space to all ideas in India, all communities, all religions. Our party is, and the design of our party, and our original designer Mahatma Gandhi designed the party to be based on truth and non-violence, compassion, affection. So it's a completely different philosophical architecture than the BJP. They sort of generate a certain amount of hatred in society, they polarize society, and they're not inclusive. They don't embrace everybody, and they divide society. That's yeah, and that's damaging in my view to India, because India has always had a tradition of conversation, of openness. All our great leaders, spiritual, political, Mahatma Gandhi, Buddha, all of them promoted harmony, promoted peace, promoted conversation. So it's in our culture, it's in our history to sort of bring people together and have these dialogues. So that's I think it's a difference in ideology between us and the BJP. We feel India should be allowed to express itself, and we feel that political leaders should be comfortable in sort of being questioned, and should learn from that questioning. So, I mean, it's just a difference in viewpoint. उन्होंने कश्मीर की बात भी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर एक बहुत बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात होने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर जमहूरी मुज़ाकरात होने की ज़रूरत है। ज़्यादा भी उन्होंने इस पर बातचीत नहीं की। ऑब्वियसली आगे इलेक्शंस के दिन आ रहे हैं, तो वो बड़े मोहतात हैं, लेकिन वो सॉफ्ट इमेज है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू। Everybody in India
has a democratic right. Every single person in India should be allowed to be part of the conversation. I think there are things that can be improved in Jammu and Kashmir with regards to that conversation, and we are committed to improving the conversation, the democratic conversation in Jammu and Kashmir. उन्होंने हमसाया ममालिक के साथ भी एक कहा जाए कि एक दोस्ती वाला रवैया जो है उसको रखने पर हल्की फुल्की बात की, कोई सीधी तरीके से नहीं बल्कि हल्की फुल्की बात की, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इलेक्शन आने वाले हैं और एक भारतीय रियासत में हाल ही में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी ने मोदी को बड़ी शिकस्त भी दी है, जिस पर मोदी को बड़ा रंज है और वो वहाँ दोबारा से अपनी जीत बनाने के लिए उस रियासत के अंदर काम कर रहे हैं. All Indian people, right, have a right to expression. All Indian people have a right to religious freedom. All Indian communities should feel free to express themselves. So I don't differentiate between any community, any caste. I think India, as I mentioned just now, is a conversation, and the freer and more open that conversation, the more powerful India becomes. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. Indian democracy is a global public good because India is large enough that a collapse in democracy in India will have an impact on the world. So that's for you to think about how much you value Indian democracy. But for us, it's an internal matter, and it's a fight that we are committed to, and we're going to win. Let the Prime Minister come here and let the visit take place, and then let's see. I don't want to sort of prejudge this. Yeah, but I do think the relationship between India and the United States is very, very important. I think it's also important that we broad-base the relationship. It's important to have a defense relationship, but I think we need to also consider other areas, and we need to have a vision for other spaces other than defense. तो आपने ये गुफ्तगू सुनी राहुल गांधी की, आपको एहसास हुआ होगा और आपने महसूस किया होगा कि वो किस तरह का भारत देखना चाह रहे हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी जीत कर अगले इंतखाबात में सामने आती है तो वो किस कदर मुख्तलिफ भारत सामने लेकर आएगी. एक और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की इस तकरीर की इंडियन मीडिया में बिल्कुल भी कवरेज नहीं हुई. इस बात का इजहार भी राहुल गांधी ने अपनी गुफ्तगू में किया था कि भारतीय मीडिया जो है वो स्पोक्स पर्सन बना हुआ है नरेंद्र मोदी का. उसकी वजूहात क्या हैं वो खैर लंबी बात है, और ये चीज़ हमने देखी राहुल गांधी की उस नेशनल प्रेस क्लब में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसकी जब कवरेज हमने देखी इंडियन मीडिया के अंदर, और वहाँ पे ये भी कहा कि उन्होंने मजहबी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की, लेकिन वो बड़ी अहम गुफ्तगू थी जिसका बिल्कुल इंडियन मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई कवरेज नहीं हुई. तो ये भी एक मेरे लिए एक बड़ा स्ट्रेंज, अजीब सी बात थी, क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत बड़ी एक कहा जाए एक वसी किस्म का एक नेटवर्क है भारत के अंदर मीडिया का, और इतने बड़े मीडिया में राहुल गांधी की कवरेज, सही कवरेज ना होना एक बड़ी अजीब सी बात थी. तो बस यही आपको थोड़ी सी खबर देनी थी कि राहुल गांधी जब आए उन्होंने क्या कहा, और अब मोदी जब आ रहे हैं तो वो क्या कहेंगे. उसकी वीडियोस भी हम आपके सामने पेश करेंगे. जहांज़ैब अली को वाशिंगटन DC से इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.